Prime Minister Narendra Modi will address a rally in Doda of Jammu and Kashmir at 12:30 p.m. today. This rally marks a significant moment as it will be the first time in over 45 years that a Prime Minister will hold a rally in the region. The last such rally was conducted by then Prime Minister Indira Gandhi in the year 1979. The rally, set to take place at the Doda Sports Stadium, is a part of the assembly elections in Jammu and Kashmir, which are being held for the first time in a decade. The area has faced long-term challenges, including issues related to terrorism. To ensure safety, tight security measures have been implemented. The entire rally venue has been sealed and drones will be used to monitor the area. Additional security has also been arranged for the surrounding regions. Now, this rally is part of BJP's Mission 50, aimed at securing a significant number of seats in the Jammu and Kashmir Assembly elections. The party is targeting 8 assembly seats in the Chenab region, which includes Doda, Doda West, Badarwa, Kishtwar, Indrawal, Pader, Nagseni, Ramban and Banihal. The BJP, in fact, is contesting all 43 seats in Jammu. Voting for the 90 assembly seats in Jammu and Kashmir will occur in 3 phases. The first phase, in fact, is scheduled for the 18th of September, followed by the second and third phases on the 25th of September and the 1st of October, respectively. The results are expected to be announced on the 8th of October. गत 11 वर्षों में मोदी जी के आने के बाद यहाँ सड़कों का जाल बिछ गया। यहाँ अनेकों पावर प्रोजेक्ट्स लगे, यहाँ मेडिकल कॉलेज, यहाँ डिग्री कॉलेज, यहाँ किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यहाँ मेडिकल कॉलेज हो भी पाएगा। यानी लोग उसकी उम्मीद ही खो बैठे थे। वो कल्पना में भी नहीं था। कल्पना जिस चीज मांग की जाती है उस चीज की जिसकी कल्पना। इतना ही नहीं, जो मोदी जी का कनेक्ट है, ये अर्सवाइल डोडा में मोदी जी का पहले भी आना रहा। 2014 में किश्तवाड़ में आए थे, जो पास का नगर है, लेकिन ये जो स्थान है डोडा, यहाँ लगभग 50 वर्ष से कोई प्रधानमंत्री नहीं आए थे। 70 के दशक के बाद पहली बार मोदी जी के आने से यहाँ पर इस बात का भी एक संकेत जाएगा कि मोदी जी ने दूर दराज पिछड़े क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों के बराबर लाने में किस प्रतिबद्धता और निष्ठा के साथ कार्य किया है।